So what is Power BI? Introduction of Power BI. This is the today's agenda. And what is Power BI and data modeling and visualizations? What is security and administration in Power BI and Power BI in real time, how it works, and what you have learned in today's session and what are the key takeaways. These are the today's agenda. So first of all, what is Power BI? It is a free application. Power BI desktop is a free application. Actually, Power BI जैसे ये वर्ड आते हैं पावर बीआई कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स. नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज पावर बीआई. इंटरव्यू में भी पूछा जाता है. देन लोग इंस्टेंटली जंप करते हैं कि पावर बीआई मींस जस्ट अ सेकंड. यस, पावर बीआई मींस पावर बीआई डेस्कटॉप करके सिनोनिमसली सोचते हैं. सिनोनिमसली मतलब एक ही जैसे सोचते हैं. पावर बीआई डेस्कटॉप अलग है, पावर बीआई अलग है. पावर बीआई इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स. वो कुछ सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन है. पावर बीआई इज नॉट वन सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर लेके ये पावर बीआई ऐसा नहीं बोलते. दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन prevailing in the market. Even in interview also, they will ask you to test this whether you really know what is Power BI. Power BI मतलब एक application नहीं है. It is a group of softwares, combination of softwares. उसमें से एक सॉफ्टवेयर Power BI desktop, that is one software on which we are going to work. So what is a Power BI desktop? It is a free application. It is free of cost. Anyone can download and anyone can practice that. That can be installed on the local system. लोकल सिस्टम मतलब लैपटॉप. रियल टाइम में आपको लैपटॉप करके वर्ड यूज नहीं करना है. इंडस्ट्री में कभी भी मेरा लैपटॉप आया, मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किया, ऐसा वर्ड्स यूज नहीं करना है. यू हैव टू ऑलवेज यूज द टर्म लोकल सिस्टम. लोकल सिस्टम मतलब आपका लैपटॉप. जो भी आपका पर्सनल डिवाइस होते हैं, लैपटॉप भी यूज नहीं करना है. दिस यू शुड रिमेंबर बिकॉज it will pass a very bad impression in client from the client's perspective. So client के साथ आप जब बात करते हो, कुछ इश्यूज आए हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे या हो गया लेकिन काम नहीं कर रहे, then you have to report that issue. How you can report that? There is some issue in installation in my local system. So you should not use the word laptop. It is a free application that can be installed on the local system, which lets you to connect to transform and visualize your data. This is the definition of Microsoft. This definition only you have to by hand as it is, because I'll explain each and every term, which lets you to connect to. That is, हम different data sets को connect कर सकते हैं. कैसे connect करना है वो सब we will see. And then transformation मतलब I already taught you about ETL, that is एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. उसका पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब. एंड देन विजुअलाइजेशन मतलब जैसे ग्राफ्स, बार्स, ऐसा. दैट इज द डेफिनेशन व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप. एंड देन यूजेस. व्हाट आर इट्स यूजेस? वी कैन यूज दिस पावर बीआई टू कनेक्ट टू मल्टीपल डेटा सोर्सेस. सो हमको रियल टाइम में पावर बीआई के साथ देर आर 250 प्लस डेटा सोर्सेस. So जैसे SQL server, that is one data source. Excel, it is one data source, right? CSV files, it is one data source. Like that, we have 250 plus data sources which we can connect to Power BI. So using 250 plus data sources, we can connect all those data sources to Power BI. So real time में हमको हमारा data मल्टीपल लोकेशंस में रहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, एग्जांपल, इट इज जस्ट एन एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल 40 टेबल्स रिक्वायर्ड हैं. सो 40 टेबल्स इज स्कैटर्ड मतलब 20 टेबल्स SQL सर्वर के अंदर है, और 2-3 टेबल्स एक्सेल फाइल के अंदर है, और 4-5 टेबल्स स्नोफ्लेक में है, और 10 टेबल्स डेटाब्रिक्स में है. तो ये 4 सोर्सेस को मुझको एक ही जगह विजुअलाइज करना है. देन पावर बीआई लेट्स यू डू दैट. दैट इज व्हाट कनेक्टिंग टू डेटा, मल्टीपल डेटा सोर्सेस. एंड देन कनेक्ट करने के बाद वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्लीन करना है. क्यों क्लीन करना है? जब हम SQL पढ़ा
उसके अंदर आपको सिखाया, राइट? जैसे हाउ टू हैंडल नल वैल्यूज को कैसे रिप्लेस करना है इज नल यूज करके, राइट? वैसे ब्लैंक वैल्यूज को अ, हम जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज है उसको रिप्लेस करके जीरो से रिप्लेस करते हैं। वो कैसे करना है, क्या करते हैं, वो सब देखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरऑल पिक्चर। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे काम होते, कैसे काम करते, एंड एंड टू एंड कैसे होगा, दैट इज द एजेंडा। सो जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड फॉर टुडे। फर्दर क्लासेस में हम एक एक चीजों के ऊपर इन डेप्थ जाएंगे। देन ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डेटा, दैट इज ETL एक्टिविटीज। देन क्लीनिंग करने के बाद वी क्रिएट विजुअल्स ऑन दैट। विजुअल्स मतलब चार्ट्स एंड ग्राफ्स। सो दिस आर द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? वी विल कनेक्ट टू डेटा सोर्स। कनेक्ट करने के बाद वी विल क्लीन दैट डेटा। क्लीन करने के बाद वी विल विजुअलाइज। दैट्स इट। ये 3 स्टेप्स आपको आ गया, देन यू नो पावर BI। दैट्स इट। Then once we create visuals, we create reports. Report मतलब collection of visuals. So एक chart रहा, एक graph रहा, then it is called a graph. एक chart रहा, it is called a chart. Then collection of graphs and charts and some visuals, it is called a report. Report मतलब collection of visuals. So once the report is created, we will share that reports with others. सो रिपोर्ट मैंने बना दिया पावर BI डेस्कटॉप में। उस रिपोर्ट को मैं एंड यूजर्स के साथ शेयर करना है। कैसे शेयर करता हूँ? यूजिंग पावर BI सर्विस। दैट इज व्हाट पावर BI सर्विस मीन्स। सो डेस्कटॉप इज यूज्ड टू क्रिएट द रिपोर्ट। once it is created, then we have to share that report with others। हमारा कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते, या फिर एंड यूजर्स बिजनेस यूजर्स के साथ भी शेयर कर सकते। वो शेयर करने के लिए Azure, एक Azure platform में, that is a cloud platform that I will explain when we see the Power BI service. Power BI service is built on Azure platform, AZURE. It is a Microsoft cloud platform. जैसे Amazon का AWS है, that is also a cloud platform. Google का GCP है, वैसे Microsoft का Azure रहते हैं। Azure is a cloud platform. So Power BI service is built on that Azure platform. उस platform में we will share the reports. Then, so these are the multiple data sources what we have just discussed. Yes, this is Excel sheet. This is SQL Server. One is MongoDB, and then one is cloud. This is Salesforce. Like that, multiple data sources we have taken. Multiple data sources को मैंने क्या किया? Connect किया. That is connect to data. Multiple data sources. So multiple data sources लेके Power BI को connect किया. This is a Power BI desktop app. कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर क्या किया मैंने? ETL एक्टिविटी, क्लेंजिंग किया, डेटा क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब डेटा को क्लीन किया। एंड देन क्लीन करने के बाद आई स्टार्टेड क्रिएटिंग विजुअलाइजेशंस। दिस इज विजुअलाइजेशंस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। इट्स a collection of multiple visuals. So this is a line graph. Okay, these are multiple charts and graphs. It's a multiple collection of charts and graphs. It's called a report. This is one report. So these are the data sources. This is the Power BI desktop, and this is the Power BI service. So once the report is created, we can share this report with others using Power BI service. So these are the 3 steps, that is connecting to multiple data sources, transform and cleaning the data, ETL, and then creating visuals. Once these 3 steps are completed, collection of visuals is called a report, and that reports, in order to share with others, we will use Power BI service. Then what are the parts of Power BI? So Power BI matlab it is consisting of these 3 parts. So generally लोग क्या सोचते हैं, Power BI मतलब only Power BI desktop. That is not correct. So Power BI matlab Power BI consists of these 3 parts. Yeah. What is that? Power BI desktop, and then Power BI server. Power BI service. Power BI service is a SaaS. SaaS means software as a service. वो क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब क्या है? दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. So Power BI desktop,
पावर बीआई सर्विस फॉर नाउ यू रिमेंबर पावर बीआई डेस्कटॉप मतलब आपका लोकल सिस्टम में रहते लोकल सिस्टम मतलब लैपटॉप so Power BI desktop is present in your local system that is laptop. Power BI service is present in the cloud. Cloud मतलब अभी के लिए ये सोचो कि ब्राउजर के अंदर हम ओपन करना है वो ब्राउजर में हम कनेक्ट करते हैं उसको सो पावर बीआई डेस्कटॉप इज प्रेजेंट इन योर लोकल सिस्टम दैट इज लैपटॉप जैसे सीक्वल सर्वर जैसे हम यूज करते थे वैसे ही पावर बीआई डेस्कटॉप को यूज कर सकते हैं सो पावर बीआई सर्विस इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म अभी के लिए क्या याद रखना दैट इज इट वुड बी यूज्ड इन ब्राउजर जस्ट लाइक योर जीमेल ब्राउजर में कैसे यूज करते इन द सेम वे और बे सर्विस भी ब्राउजर में हम यूज करते दैट आई विल शो यू नाउ and then third one is Power BI apps. So this Power BI apps is available on any device with native mobile BI apps for Windows, iOS and Android. So in all these three that is Windows, iOS and Android ये तीनों में ये Power BI apps रहते हैं सो आप अपना मोबाइल के अंदर भी पावर बीआई ऐप को डाउनलोड करके रिपोर्ट्स देख सकते हैं सो एंड यूजर्स दैट इज सीईओज ऑफ द कंपनीज वुड व्यू रिपोर्ट्स लाइक दैट ओनली अपना मोबाइल में ये रिपोर्ट जो भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं वो रिपोर्ट्स उसके मोबाइल में जाते हैं दे विल सी दैट इन देयर मोबाइल्स एंड दे विल टेक द बिजनेस डिसीजंस so now let's start. So this is the Power BI application. This is the interface. Okay. जब आप Power BI खोलते हो, then this would open. This is the first page or first view. This is the front end. This is called as front end. So there will be one front end and one back end. Back end मतलब ETL activity. Whatever the ETL activity we do, that is called as back end. Okay, so for now, this is the front end. That is, it is written like Power BI desktop. This is the Power BI desktop. Okay, it is untitled because you have to give some name to it. So, yeah, so this is your Power BI desktop interface. So now, right now, what I'm going to do is that I'm going to show you end to end one project within 30 minutes. I'll show you one simple project end to end. So this is like an overview. आपका पूरा कोर्स में क्या क्या हम करने वाला है इन 30 मिनट्स में आई जस्ट शो यू ओके सो फ्रॉम टुमारो वी विल गो इन डेप्थ ऑन ईच एंड एवरी स्टेप so here what I'm going to do I'm going to connect to the data set what is the first step I've shown you we will connect to the data set right we will connect to the data multiple data sources so now I'm connecting to one data source let's take Excel sheet I'm connecting to one Excel sheet I'm importing some data okay I'm not performing any ETL activity because the data is cleaned only and I will create some visuals and I'll create one report and I will publish that report in the Power BI service there ends the Power BI project that's it so how to connect the data here if you see this is get data this is one option that is connect to data from multiple sources so here when you click on drop down, you will get multiple data sources. Here it is written as common data sources. Why it is common data sources? So this is written in the order of preference. In the first lines, everything would be belonging to Microsoft only. If you observe, all these are Microsoft products only. Once Microsoft products are completed, then they will give more option. Once you click on more, you will get 250 plus data sources through which you can connect. These are called connectors. These are called connectors. ऐसा आप 250 प्लस डेटा सोर्सेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो जैसे एक्सेल वर्कबुक है दिस इज वन डेटा सोर्स टेक्स्ट और CSV फाइल दिस इज वन डेटा सोर्स XML वन डेटा सोर्स JSON फाइल्स वन डेटा सोर्स फोल्डर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो PDF
like that SharePoint and then IMDb DB2. जैसे SQL Server हम पढ़ा, IMDb का DB2 it is also a database. This is SQL Server database. Like that you will have MySQL database. Like that multiple databases as well as data sources. All these are data sources. So for now, for today, let's connect to one Excel workbook. So I'm connecting to this financial sample. ये एक workbook है, इसको मैं connect कर रहा हूँ. So once I click on connect, इसे एक navigator box open होता है. Once it is opened, on the left hand side, this is your data source, that is financial sample dot excel sx. This is the extension, okay, extension of this file. So inside that there will be two sheets. So this is the backend sheet, this is the main sheet, that is click on this sheet one. So once you click on this sheet one, then here you can see the data. So why you need to see the data? Just to see whether the data is structured or unstructured. I'll explain what the types of data. So अभी SQL में हम data types पढ़ा. We need to study types of data in Power BI. That I will explain you in tomorrow's session. That is structured and unstructured data. So this is called as structured data. Structured data मतलब the data which is in tabular form. This is a table. SQL में हम देखा, SQL Server में हम देखा, right? This is a table. So this is a structured data. So here you have three options: load, transform data, and cancel. So once you click on load, this data set would get loaded into the Power BI desktop. Once you click on transform data, it will enter into the backend. Backend means transform, that is, this is the backend. Transform and clean data, ETL activity. Once you click on transform data, it will enter into the backend ETL activity, that is data cleansing. So for now, this data set is clean. So I don't need transform data. I'm clicking on load data. Once I click on load, the data gets loaded into the Power BI desktop. So creating connection in model. So what is this model? Loading data to model. 700 rows got loaded. So here on the left hand side, if you observe, there are three views. These are called three views. So this is your interview question. So all this I'll explain in detail. As I said, this is an overview for today. So this is the report view, this is the data view, and this is the model view. What is report view? Report view में आप visuals बना सकते हैं. You can build your visuals here with the existing data. This is called report view. डेटा व्यू से आप क्या करते हो? जो भी डेटा आप एंटर किया या लोड किया उसको देख सकते हैं. इफ यू क्लिक ऑन दिस, दिस इज द डेटा व्यू. तो जो भी टेबल आपने लोड किया उस टेबल को आप इधर देख सकते हैं, पूरा टेबल को. दैट इज कॉल्ड डेटा व्यू. दिस इज मॉडल व्यू. मॉडल व्यू मतलब इधर आप डेटा मॉडलिंग करते हो. व्हाट इज डेटा मॉडलिंग and how we do that, that I'll explain in later stages. Right now we have taken only one data set, so we don't need this model. Okay, so let's go to report view. Just a second. Just a second. Yeah. So, yeah. So on the right hand side, you can see the sheet. Sheet means whatever the data you have uploaded or loaded in the Power BI, you can see that here. All these are field names. Field matlab column, as I already taught you in SQL Server, right? All these are field names. So here you can create the visuals. So right now we are connected to the data. We are connected to the data and transformation is not needed because it is a cleaned. And right now we are creating visuals, that is charts or graphs. So let's create some visuals. So what I'm going to create here on this visualization pane, these are all called panes. PANES. Panes मतलब एक बोर्ड जैसा समझ लो.
पेन, PAN, पेन. This is one पेन. So visualization पेन मतलब इधर पूरा विजुअलाइजेशन रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन रहते. दिस इज डेटा पेन. डेटा पेन मतलब इधर डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही रहते. एंड दिस इज कॉल्ड फिल्टर्स पेन. फिल्टर्स पेन मतलब इधर सिर्फ फिल्टर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही रहते. दैट इज कॉल्ड पेन्स. PANES, पेन्स. So let's create some visuals. Here in this visuals, if you observe, in the first line, all are in bar charts, bar and stacked charts, like bar graphs. All are bar graphs. In second line, it would be lines. Like that, every line, the visualizations would differ. Okay. So let's create one visual. If you click on this visual, it will reflect here. So here there would be x-axis and y-axis. You can see here x-axis and y-axis. So what I'm going to represent here in this particular visual, I want to represent sales by country. So here there is sales. I'm representing sales by country. So this is a visual which represents sales by country. मतलब एक एक कंट्री में कितना सेल्स हुआ है. That is the ऑब्जेक्टिव. दैट इज सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री. आपको रियल टाइम में क्राइटेरिया ऐसा दिया जाता है. लाइक मुझको एक रिपोर्ट बना के दो इन विच आई वांट सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री. So like this you need to create. So we have created sum of sales by country. This is one visual. So based on this visual, आपको, for example, this is United States. Once you keep your cursor on this, it will show country is United States of America. Sum of sales 25 million. This is 25 million. But I want to show that 25 million here beside this graph. Then you need to switch on data labels. उसको कैसे switch on करने हैं? Go to this. This is normal visual. If you go to this format, then you can see the data labels. Once you see the data labels, if you switch on, it will display like this: 25 million, 25 million, 24 million, like this sales. And here you can format, like x-axis आपको नहीं दिख रहे, then you can increase the font size like this. This is United States of America, Canada, France, Germany and Mexico. And then x-axis को भी आप increase कर सकते हो in the same way. Like this. So this is one visual. That is, what is this visual? Sum of sales by country. And इसको आप formatting and background change करना वो सब कर सकते हैं. That I will teach you in step by step manner. ये सब हम एक एक step को हम in depth जाएंगे. This is just an overview. That is, I am creating one report, complete report. So this is one visual. That is, what is this visual? Sum of sales by country. तो इसी को आप चेंज भी कर सकते हो, इसी टाइटल को. लाइक अगर टाइटल आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए, देन यू कैन चेंज द टाइटल ऑफ दिस विजुअल ऑल्सो. दैट आई विल teach you. Like once we complete one or two reports, then I will teach you that also, like how to change the title. Like here you can see the title. This is sum of sales by country. This is by default Power BI देते हैं. इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. That is based on users input. That is sales by country. Like this. This is one visual. That is sales by country. Then once it is done, then you need card visuals. This is called as card visual. Card visuals किसके लिए? हम सिंगल पैरामीटर्स को, लाइक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को दिखाने के लिए. पैरामीटर्स मतलब नॉट द पैरामीटर्स व्हाट आई हैव टॉट यू इन सीक्वल. ओके, इफ यू आर कंफ्यूजिंग, देन लेट्स से इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स. मेट्रिक्स मतलब इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर ए कंपनी. फॉर एग्जांपल सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, कितना यूनिट सेल हुआ, and gross sales कितना है, वो सब दिखाने के लिए we will use card visuals. So in that what I'm showing sales, that is the total sales. This is the sales, that is sum of sales. इसका भी आप
ये टाइटल चेंज कर सकते हो, दैट इज go to title and you can change the title, that is sales, like that. So this is one visual. What is this visual? It is about sales. So I want to create multiple metrics like this. ऐसे sales जैसे मुझको profit दिखाना है, unit sold दिखाना है, gross sales दिखाना है. Then you just click on this, Control C and then Control V. Then it gets copied. Same card gets copied. Again Control C, Control V. Again this gets copied. I want multiple cards. Why I want? I'll just show you. So this is about sales. Now I want to show profit. So in order to show the profit, you need to select profit here. Here it is profit. So I'm selecting profit. This is about profit. This is sales and this is profit. And change the title. So this is sales and this is profit. And then I want to show, in addition to sales and profit, I want to show units sold. How many units I've sold in a single year or in total. Then I have to select units sold. Here you can see the units sold. And in addition to that, I want to show gross sales also. Gross sales मतलब total sales कितना हुआ है. This is about gross sales. So let's change the titles. This is about gross sales and this is about units sold. And this is about profit. Done. So this is about sales, this is about profit, this is about units sold and this is about gross sales. ये सब मुझको दिखाना था. Then in addition to this, I want to show another chart. What is that? I want to show profit on monthly basis. मुझको profit दिखाना है, लेकिन हर month में कितना profit आया वो दिखाना है. Month wise profit. Then how I can do that? I need to select one profit and then one date. So this shows profit by month. That is हर एक month में कितना profit आया. If you want to observe clearly like this. Every month profit कितना आया. This is the graph. So this I want to show. That is profit by month. This is one visual. Then finally मुझको एंड यूजर को बेस्ड ऑन कंट्री, दैट इज अगर एंड यूजर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें कितना सेल्स है वो देखना चाहिए. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस यूएस, देन दिस ऑल द विजुअल्स वुड चेंज. सब कुछ चेंज हो जाते हैं बेस्ड ऑन दिस फिल्ट्रेशन. यूएस का जितना सेल्स है, यूएस का कितना प्रॉफिट है, यूएस का कितना यूनिट सेल हुआ है एंड यूएस यूएस का प्रॉफिट वाइज मंथ वाइज प्रॉफिट कितना है, ये सब ऐसा दिखाता है. लेकिन एंड यूजर को ये समझ में नहीं आता है ऐसा देखने में. देन एंड यूजर के लिए वी नीड टू क्रिएट वन ड्रॉप डाउन. सो ड्रॉप डाउन मतलब क्या है? आई जस्ट शो यू. सो दिस विजुअल इज कॉल्ड स्लाइसर. सो इस स्लाइसर में मैं कंट्री ऐड कर रहा हूँ. सो कंट्री ऐड करके आई वांट टू गिव द ऑप्शन एज ड्रॉप डाउन. ओके. सो लाइक दिस. सो दिस आर लिस्ट ऑफ कंट्रीज. इस लिस्ट ऑफ कंट्रीज में मुझको यूएस सेलेक्ट किया, एंड यूजर यूएस सेलेक्ट किया. देन ये पूरा रिपोर्ट में, ये पूरा विजुअल में, ये पूरा पेज में जितना भी विजुअल्स आपको देख रहे हैं ये पूरा यूएस रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है. पहला कैसे होते थे? अगर ये नहीं रहा तो सिर्फ ये क्लिक किया तो ये पूरा इंफॉर्मेशन यूएस रिलेटेड है, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि because for example if you go hover on this, it is sum of profit is 763 something something, but आपको ऐसा पिक्चराइज करने में डिफिकल्टी होते हैं.
But when you use slicer, if you click on this, इंफॉर्मेशन पूरा उसका सेम इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन देखने में ये सिर्फ यूएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपको दिखा जाता है. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस स्लाइसर. दिस इज वन ऑफ द पर्पस. एंड इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स होते हैं दैट आई विल टीच यू. ओके, आई एम क्रिएटिंग 3 slicers. Why? First one is for country. Okay, and second one I'm creating for product. Product wise मुझको filter करना है. Then I'm creating one slicer for product, and apart from that I'm creating one more slicer for segment also. So country, product and segment. Okay, so now the end user questions are all answered. These are the questions given by end user. Now I have answered all the questions through this report. Now the report is completed. That is collection of visuals is completed. This is one complete report. Now I want to give some name. I want to give some name to this report. So I'm giving it as finance report. Okay, so this is the finance report. This is the whole report. So आपको रियल टाइम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, एंड वो क्वेश्चंस को आप ऐसे विजुअल्स क्रिएट करते हो एंड एक रिपोर्ट बनाते हो. दिस इज वन रिपोर्ट, दैट्स इट. सो हम क्या किया पहले, we have connected to data sources, that is excel sheet से connect किया, and transform and clean करना था लेकिन हमारा data set clean है तो ये नहीं किया. Then we have created visuals, charts and graphs, and it is a collection of visuals. This is called one report. हम कौन सा report बनाया? Finance report बनाया. Now I want to share that report with others. Then how I can do that? Using this publish option. Once I publish this report, that is publish this report online in the Power BI service. So before publishing this, I want to save this report. We have to save the report. Once you save the report, it gets saved and then you can publish that report. So now it is saved and then you can just publish it. Once you click on publish, you will get sample workspace. And when you click on sample workspace, this report gets published to the Power BI service. Done. It is published.